औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक और मेरा और आपका साथ रहता है फ्राइडे वाले दिन 8 बजे के बाद से लाइव ट्रांसमिशन मेरी और आपके साथ ये बात होती है। अभी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके साथ थे पूरा महीना फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आज ईद के बाद जो है ये पहला हमारा लाइव ट्रांसमिशन है प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक का। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बिलेटेड ईद मुबारक। आई होप एवरीबडी एंजॉयड द ईद और एंड एज यू ऑल नो वी आर आउट ऑफ कोविड ऑलमोस्ट। तो people were mingling around, having eat dinners and parties and all that. So that was a good खुशाइन थी बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, आपको पता है कि ओंटारियो में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं इलेक्शंस की बात करूं, आप हमारी ट्रांसमिशन जो है ये आप आईपी चैनल्स पे देखते हैं, आप हमें फेसबुक पे लाइव देखते हैं, यूट्यूब पे भी हम आपके साथ होते हैं। ड्यूरिंग द लाइव ट्रांसमिशन अगर आपका कोई भी सेंटिमेंट हो, कुछ आप बात करना चाहते हो इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है मेरा ये प्रोविंशियल इलेक्शंस के हवाले से है और इस पे मैं बहुत सारी आपसे बात करूंगा। तो इस हवाले से हमारी जो लाइंस हैं वो बीच में खुली रहेंगी। अगर आप ड्यूरिंग द शो मुझसे बात करना चाहें तो प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल। हमारे स्टूडियोज़ के नंबर जो हैं वो हमेशा हमारे स्क्रीन पर रहते हैं। 9056704114 हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल जो है @voiceoftoronto TV है। फीडबैक के लिए वॉइस ऑफ टोरंटो TV चलिए एक कॉल आ गई थी बीच में। वी विल टेक द कॉल्स आफ्टर माई इंट्रो। तो वॉइस ऑफ टोरंटो TV @gmail.com जो है वो हमारा ईमेल एड्रेस है फॉर फीडबैक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम अगैन। जैसे आपको इल्म है नाज़रीन कि अब हम इलेक्शंस में जा रहे हैं और इलेक्शन कॉल हो गया है। प्रीमियर डग फोर्ड जो थे उन्होंने गवर्नर जनरल को अप्रोच किया 2-3 दिन पहले और उनसे कहा कि वो असेंबलीज़ डिज़ोल्व कर दें और अब असेंबलीज़ डिज़ोल्व हो चुकी हैं और अब 2 दिन पहले जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है उसका किक ऑफ हो चुका है। तो अब आप जैसे आपको इल्म है कि जैसे कि आप बाहर निकलेंगे आपको देखेंगे आपके यार्ड्स में इधर उधर रोड्स के ऊपर यू विल सी लॉट ऑफ साइंस। लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपके एरिया में आपके जो कैंडिडेट हैं वो कौन हैं, आप उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, चाहे आपने उनके लिए कोई वॉलंटरली काम किया है या नहीं किया है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएं तो ये आपको इल्म हो कि आपका इस एरिया में जो कैंडिडेट है वो कौन है, वो लिबरल से है, NDP से है, कंजर्वेटिव से है, ग्रीन पार्टी से है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना जो वोट है उसको कास्ट करें, बिकॉज़ ये बड़ा एक अहम फरीज़ा है जो आपका वोट है और इसका हक़ आपको दिया है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, इलेक्शन ओंटारियो ने भी, इलेक्शन कनाडा ने भी। जब आप फेडरल इलेक्शंस में वोट डालते हैं और जब आप प्रोविंशियल में डालते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन आप जाएं और जाके वोट डालें। बल्कि एडवांस पोलिंग्स जो हैं वो मुझे ये बताया गया है कि 10 डेज़ पहले वो खुल जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट डे जो वोटिंग का है June 2 आप उसी दिन जाएं। यू कैन गो 10 डेज़ विद इन दैट 10 डेज़ पीरियड एंड यू कैन गो एंड वोट। तो आज हमने कोशिश ये की है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर, कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी कि हम रैलीज़ भी कवर कर रहे हैं, उनसे हम उनकी जो कैंपेन लॉन्च है उस पर हम बात भी कर रहे हैं, उनसे हम थोड़ा सा पूछ भी रहे हैं कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। लेकिन फिर उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं जो उन्होंने हमारे साथ बात करके आपके लिए रिकॉर्ड की हैं, जो कि अब हम चाहेंगे कि ड्यूरिंग ये हमारा जो सेशन चलेगा इसके अंदर जो इंटरव्यूज़ हम करेंगे और जो रैलीज़ को हम कवर करेंगे और जो कैंपेन्स को हम कवर करेंगे वो आप इस पर देखते रहेंगे। इसके लिए भी आप हमें फ़ीडबैक अपना दे सकते हैं और फीडबैक के लिए वॉइस ऑफ टोरंटो TV @gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप लाइव होते हैं, आप हमें फेसबुक के ऊपर भी वॉच करते हैं, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये भी आप हमें बता सकते हैं कि आपका जो एरिया है राइडिंग जो है उसके अंदर अगर आप नए हैं और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इस मुल्क में नए हैं, आप न्यू इमिग्रेंट हैं, कनाडा में नए आए हैं और आपको इल्म नहीं है कि यहाँ इलेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे उसको फॉलो किया जाता है, कहाँ आपको जाके वोट डालने हैं, किस दिन आपको वोट डालना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी और उससे आप जो है अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपना फ़ीडबैक हमें देना चाहते हैं इन रिगार्ड्स टू इलेक्शंस के हवाले से तो आपको, जैसे मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, आप हमें ईमेल पे भी बता सकते हैं।
तो आज हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं जिनसे हमारी अभी बात हुई है और जिन्होंने अपनी कैंपेन लॉन्च की है, जिसमें कि समीरा अली जो कि मिल्टन से काउंसलर जो हैं, वो 4 साल काउंसलर थी, वहाँ उसको उन्होंने सर्व किया। उसके बाद लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा ने उनको वहाँ का टिकट दिया प्रोविंशियल एमपीपी के लिए, वो वहाँ से कैंडिडेट हैं मिल्टन से। उसके बाद हमारे साथ हैं जो कि नीना टांगरी हैं जो कि एरन मिल्स के एरिया से कैंडिडेट हैं पीसी पार्टी की। पिछली गवर्नमेंट के अंदर वो मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस रही हैं और ये उनका पहला टर्म था और वो री इलेक्शन के लिए जा रही हैं। जो री इलेक्शन के लिए दूसरे कैंडिडेट जा रहे हैं उसमें दीपक आनंद साहब हैं जो कि एमपी हैं इटुबको के एरिया से, वो दोबारा री इलेक्शन के लिए खड़े हैं। इसी तरह शरीफ सबावी जो हैं वो री इलेक्शन के लिए खड़े हैं। एमपीपी नतालिया जो हैं वो री इलेक्शन के लिए खड़ी हैं। इसलिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो री इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमारे कुछ 6 या 7 लिबरल कैंडिडेट्स हैं जिनको कि टिकट दिया गया है। इसमें शफीक साहब हैं, सफदर हुसैन साहब हैं, समीरा अली हैं, सुमेरा मलिक हैं, इस तरह बहुत सारे जो एक जन्नत ग्रेवाल हैं जो ब्रैम्पटन से हैं। इस तरह बहुत सारे जो नए कैंडिडेट जो कि अब आप देखेंगे कि जो सामने आ रहे हैं, तो उनका भी आप जो है वो मैंडेट सुने, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे ड्यूरिंग हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर हम लोगों को बुलाते रहें अपने शोज़ में, उनको इंट्रोड्यूस भी करें आपके साथ, ताकि आपको पहचान भी हो जाए कि उनका नाम क्या है और वो किस राइडिंग में हैं, उनकी राइडिंग कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की है कि अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम आपके लिए लेके आएँ इलेक्शन ऑन्टेरियो 2022 के हवाले से। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक हमारी जो कैंपेन रैली में बात हुई समीरा अली से, जब उन्होंने अपनी कैंपेन लॉन्च की 2 दिन पहले, तो विल गो टू दैट और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम में वापस आते हैं। प्लीज़ डू नॉट चेंज दिस चैनल, यू आर वाचिंग प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक ऑन Friday and we'll come back to you right after this 6, 7, 8 minutes of the video message. Thank you. Hello everyone, you're watching Voice of Toronto TV and I have a very dear friend of mine who is campaign kicking off his campaign on today. First of all, this is Anjum Malik from Voice of Toronto TV, and I have the honor of speaking with Samira Ali, the candidate from Milton, first of all, Read Malik government, Chandra and You can all see her that she is on a bike here. rain and everything. A lot of people are pouring into the office here. So how's the official kickoff of the campaign is from today? Today at 12 a.m. The campaign starts, the red cross, so to speak, and then it's full on, game on. Okay. How do you foresee there are so much have happened in the previous few days with the new budget that have come out with the Ford government? You want to put a little light on that? How do you guys taking up on this? I mean, then I'll ask you some other questions. Yeah. Well, I mean, I don't know if it should be called a budget because a budget is a budget once it's approved. It is basically a campaign platform by the PCs. Yeah. And at this point, I don't even know if this is going to pass. But you need a majority government to pass that. And looking at the polls, I don't know if that's a possibility because we are working very, very hard. The budget, I think, falls short. There are many disappointing things in there. Autism has not been mentioned. There's nothing for the environment. It is just a disappointment. And the Ontarian Liberals are giving Ontarians a choice, a better choice. And I invite everybody to check out our platform on OntarioLiberal.ca. Okay. One of the questions that comes to anybody's mind, and mine as well, Samira, that Liberal Party in Ontario needed to do a lot of homework for this election. How geared up are you for this June 2nd election? We are ready to go, hit the ground running. We've been working very hard ever since I got nominated in 2020 October. I've been working hard, knocking doors, trying to understand, keeping my ear on the ground, listening to people, what they have to say, what ideas they have for me. I've been taking all of that back to the party, and that is all included in the platform that's coming out. We have spent the past 2 years as a party through a research process. It's
called Take the Mic, and all of those ideas will be reflected in our platform, which is going to be released very, very soon. An example of that is $1 transit. And so with that, we're providing Ontarians a better option for commuting. You know, we're providing Ontarians 25,000 new jobs, and we're also making our whole province more environmentally friendly. Okay. Now, you have served as a councillor in the Milton riding. So a lot of people know you in this riding. You have done a lot of work as a councillor as well. What is the one most important thing you want to achieve if you get elected as an MPP from this riding? Number one priority for Miltonians for many years, I would say more than a decade, is a university, a secondary institution, post-secondary education institution. I know that the funding was taken away by the Darfur government in 2018. They re-announced it almost a year and a half ago, but there are no shovels in the ground. There are photo ops, there are announcements about announcements, but there is nothing concrete. My first priority would be to make that happen, to make it a reality for the town of Milton, for the riding of Milton, and with that will come a lot of prosperity, a lot of growth, a lot of infrastructure. So I look forward to So is there a land already acquired for the university already? Absolutely, it's already zoned out, planned out by the town of Milton. It's called the Milton Education Village. It is right by the velodrome. A lot of Miltonians will know that. Drive around and you will see all of that area around it is already zoned to education. What do you guys have for seniors in this province or people who have been on disability, low-income housing, more affordable housing for a younger generation and the Torontonians actually? That's a very good question. We don't have a complete platform out yet, but you will see a lot of good things for the seniors who I know have suffered a lot, especially by being cut off by the world because of the pandemic, and we have taken that into account with the platform that we're putting out. So stay tuned, watch our website, OntarioLiberals.ca. Okay. We are on a need day here as well. So what is your message to our community today? My message to my community is that, I just want to wish everybody Eid Mubarak. I want to say that may Allah accept our worship and our ibadah during this month. I know it's been a hard month because we had to fast, but we were also working, volunteering in the community. It makes me very proud to see my community being very productive. I am very proud to see how Muslims make themselves productive even during Ramadan. So Eid Mubarak. Thank you, Samira. Thank you and good luck. Good luck. Thank you. Thank you so much. Thanks. व्यूअर्स ये थी हमारे साथ कैंडिडेट समीरा अली जो कि काउंसलर रह चुकी हैं मिल्टन में, और अब जो हैं वो एमपीपी के टिकट के लिए लिबरल से वो लड़ रही हैं मिल्टन राइडिंग से, और 27 मैरी स्ट्रीट के ऊपर उनका ऑफिस है। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम। किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो इस हवाले से, अगर आप मिल्टन में रहते हैं और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। विल बी एबल टू गिव यू ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। जून 2 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में आपसे कहा, और वी आर इन इलेक्शन स्पिरिट राइट नाउ इन ओंटारियो। और तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको घरों पे भी आ रहे हैं, नॉक्स भी कर रहे हैं, घरों पे आपसे बात भी करने के लिए आ रहे हैं। तो आप सबको सुनें, आप कोशिश करें कि आप लोग आपको अप्रोच करें, जो कैंडिडेट आपको अप्रोच करें, आप उनको सुने, उनका मैंडेट सुने, उनका विज़न क्या है उस राइडिंग के लिए, आपके वहाँ मसाइल क्या हैं, आया कि वो मसाइल पिछली गवर्नमेंट जो थी वो उसको हल कर पाई, नहीं कर पाई, आप समझते हैं कि आपको नए आदमी को किसी को वोट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए आपका इंटरेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप वॉलंटियर भी करना चाहते हैं तो आप अपनी राइडिंग में आप पता करें कि आपकी राइडिंग में कौन से कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त लड़ रहे हैं इलेक्शन, और अगर आप चाहें तो आप वहाँ जाके भी वॉलंटियर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को वॉलंटियर करना के आवर्स चाहिए होते हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम। कई दफ़ा उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उनको वॉलंटियर के लिए टाइम चाहिए होता है स्कूलों से, तो वो जा सकते हैं और वॉलंटियर भी कर सकते हैं। और आगे चल के हम बात करते हैं अपने दूसरे दो हमारे जो पीसी के कैंडिडेट्स हैं जिनकी की कैंपेन ऑफिस में हमने जाके बात की।
लेकिन उससे पहले कि हम उस पर जाएँ, हम एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं। कुछ मैसेजेस हैं वो आप तक पहुँचाने हैं, कुछ स्पॉन्सर के मैसेजेस हैं, कुछ हमारे MPPs हैं उनके मैसेजेस हैं, तो वी ब्रिंग दैट आउट टू यू and please keep on watching Prime Time with Anjum Malik, and I'll come back to you in about 2 to 3 minutes of time, and then we will talk to one of the other candidates. Thank you so much. For all your tax and accounting consulting needs, call Waris Shah, your own tax and accounting consultant. Based in Mississauga, call now 905-232-7829. Hello everyone, my name is Nasser Shah. I specialize in any mortgages, loans and franchise business. For any such need, please contact me. Hi, this is Sharif Sabawi, your MPP of Mississauga Inlands. It is my honor to represent the people of Mississauga Inlands. Since taking the office, I have been doing my best to help individuals, families, and businesses right here in Mississauga Inlands. During the pandemic, the government of Ontario has worked very hard to save lives, keep Ontarians healthy, and sustain small businesses that were experiencing hardship due to the lockdown. Then, now, and always, I promise to be the voice of my riding. If you have any problem, issue, concern, or question, please contact my office anytime. I will be more than happy to meet with you and discuss any concerns you might have. Even if we can't solve your problem, we will tell you where to go to get some help. Your MPP, Sharif Sabawi. रियल एस्टेट ज़रूरत भी इन्वेस्टमेंट भी। रियल एस्टेट खरीदते और बेचते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द सेलर्स एंड बायर्स। मैं असफर ताहिर आपके लिए ला रहा हूँ रियल्टर्स कैफे, जहाँ पर प्रोफेशनल रियल्टर्स एंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट्स आपके उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप जानना चाहते हैं। रियल्टर्स कैफे ओनली ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। फ़लस्तीन का जो कॉज है, काफ़ी लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पूरी दुनिया के मुंह पर, ह्यूमन राइट्स वालों के मुंह पर। इंसानी जान की कीमत हर जगह पे सेम है। खुदा के लिए इंसान को इंसान समझे, बाकी मजहब तो आपका सारा कुछ अपनी जगह पे। It's always a very emotional. हम भी पैसे जमा कर रहे हैं फ़लस्तीन भाइयों के लिए। I think the long weekend will definitely still be in lockdown. हमारा जो बजट था वो पास हो गया है। क्या खास ऐसी प्रमोशन आप दे के जा रहे हैं? फर्स्ट 10 कस्टमर हमारे पास आएंगे। फर्स्ट 10 कस्टमर गोल्ड की जो नोट थी ना बिल्कुल फ्री देंगे। Please stay with us. Prime Time with Anjum Malik on Friday. This is Kubra Ali. I'll be starting a new show, Dil Ki Baatein. Every
Style and Chic Salon. Experienced and talented staff, where you will find awesome skills and outstanding work, where skill is everything. A variety of modern style, simple and elegant, what you need. Call to set up your appointment. 2763 Danforth Avenue, Scarborough, Ontario, 416-460-4592. वेलकम बैक व्यूअर्स, यू आर वाचिंग प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक और मेरा और आपका साथ रहता है फ्राइडे वाले दिन। और ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो कि मेहमान रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद मैं आपके साथ अब हाज़िर हूँ। वी आर बैक इन टू आर नॉर्मल ट्रांसमिशन। और अभी आपने मुलाहिज़ा किया था एक हमारी जो बातचीत थी वो असमीर अली के साथ, जो कि मिल्टन की कैंडिडेट हैं इस वक्त लिबरल पार्टी से। अब हमारे पास दो और कैंडिडेट हैं जिनकी कि कैंपेन ओपनिंग में आई वाज देयर एंड आई हैड चांस टू टॉक टू देम। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे साथ नीना टांगरी हैं। नीना टांगरी जो हैं, शी हैज़ बिन अ वेरी एक्टिव मेंबर इन दी इन द एरिया ऑफ एरन मिल्स के एरिया में जहाँ से वो जीती थी, और वहीं पर उनका जो है वो कैंपेन ऑफिस भी है। एंड रिसेंटली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी हर एंड टॉक टू हर इन पर्सन। तो वो जो क्लिप है, वी गोना प्ले दैट फॉर यू, एंड सो दिस विल गिव यू एन आइडिया दैट ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशंस विद द कैंडिडेट्स के व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू फॉर यू इफ़ दे गेट री इलेक्टेड फ्रॉम दोज राइडिंग्स। तो आप इसको वॉच कीजिए। दिस इज़ नीना टांगरी, हु इज़ द मिनिस्टर, हु वाज द मिनिस्टर अप टू लास्ट 3 days ago for small businesses for province of Ontario in the Ford government. So she is running again for re-election. So please watch this. Thank you. आपके लिए नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे? Hello everyone. अच्छा, मैं आपसे 2-4 चीजें सिर्फ पूछूंगा। मुझे पता है कि Nina Tangri's campaign office. She have launched her campaign today on Sunday, April 24th, and she is a sitting MPP for Ford government, and you can all see her that she is on a bike here. She had a little accident in regards to her leg, but she's healing very fast. She is strong. Nina ji, a very good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. Thank you so much. Thank you for talking to us. So I see you in a high spirit and mashallah everything. Tell me a little bit about your journey in the last 4 years with the Ford government. What have you accomplished so far, and what do you think that in the next 4 years, if your mandate is given back to you, what are some of the things that you have not done you want to accomplish in your next term? So, Anjum ji, I think what's really important is that in the last 4 years, when we came into government and the mess that we were left with by the previous Liberal government, a lot of this time has been cleaning up that mess. So, even each and every day throughout COVID, we continue to work and we continue to make sure, one, we can bring jobs back to Ontario. I think when you bring jobs, when you help create that environment for businesses to come here to invest and hire people, with all of that comes everything else, the money to invest in healthcare, the money to invest in education, and it just really makes a huge difference. So coming into government, and I just like to take the opportunity before I continue. I want to thank you, and I want to thank all of your viewers, because we're just coming through this pandemic, and because of you, the media asking the public to stay home, to stay safe, to wear a mask, physically distance. It's been a very tough 2 years for everybody, and because you've done your part, because you've got vaccinated, that's why we're able to have this event
Yeah, day. yeah. We're able to be out in public again. And so as we're working along, as we come through, the money that we have coming into our government has increased significantly because of what we've been doing. We've managed to promise 30,000 new long-term care beds. We're already on target with that. 25,000 refurbished beds that are already there. As we've seen, the long-term care sector has been completely ignored. And we took action immediately. So to make sure we have those beds available, because there are people that are taking up hospital beds, and now they can be where they should be, which is in a long-term care bed where they get the proper care that they need. Frees up those beds in the hospital that allows us then to make sure that people have access to the bed and get surgery. So, Neela ji, you are live with Voice of Toronto TV. So, a lot of our viewers would like to ask. You had a portfolio of a small business minister, I believe, Minister of Small Businesses. Some of the people, have received their grants, when the Premier Ford have announced it, which was a great initiative. But for a lot of people that I spoke to, they said the last grant that was announced, people were having a lot of issues about that. Can you kind of put a little highlight on that? Absolutely. So for the Small Business Relief Grant, the most recent one, which was $10,000, so for that grant you had to be shut down. So previously we opened it up to all businesses pretty much. Because of the pandemic we had to close most businesses down. But in January we only closed down a few businesses. So it's gyms, restaurants for indoor dining, and a few others. So for those that qualified for that, we were able to see from the previous grants. So if they qualified and we felt that they qualified this time, we actually just sent them a very quick email, answer these questions. Yes, I'm still in business. Yes, I'm still doing this business. And yes, you had to get a 20% reduction in your sales. And we very quickly sent the money out to those people. So they got it very fast. And then we opened up a portal for those businesses, even if they were new. So we compared December to January revenue. And a lot of So if they were totally shut down between that period. Okay. So, for example, some places, retail stores were not closed down, so they would not have qualified. They were not qualified. Okay. Even though they were at 50% capacity. However, we still had the rebates for hydro, the rebates for property tax. So if you were closed at 50%, you still qualified. We got 50% of that back too. So we wanted to make sure that everybody was able to qualify. We've actually sent out in the first two rounds of the grant over 110,000 businesses. This time we sent $183 million so far, so that's 18,000 businesses. And we're still working on some of them at this point. And I personally have got involved in some of them where I feel that because they were a restaurant, they had indoor dining. Some people, because they had gyms, the name sometimes doesn't make it obvious that it's a gym. So we've been helping a lot of those, and they've been getting their money. So let me ask you a couple of very important questions. As we all gone through the pandemic, and there was a lot of noise in the community where premiers, some of those decisions that he was making at the time were kind of questioned. For example, that Ontario was in a lockdown for a lot of more period as compared to the other provinces. When he was making those decisions, was he talking to your guys, were you guys on the same table? And do you think that the lockdown period that we had, that was justified? Absolutely. So all of the decisions that our government made, the Premier made, was with the advice of the Chief Medical Officer of Health. So when we always looked at what other jurisdictions were doing, we found that many jurisdictions opened up much too fast, and then they had it very quickly, especially when the Delta variant came in, because it was a much more deadly variant. That's why we chose to stay close a little longer in some other places. And because of that, actually, our hospitalizations, our ICU capacity, and the deaths were less compared to many other places. When we look at Ontario compared to the world, for example, we have fared better than everyone. But one of the biggest reasons that happened is because our communities went out and got vaccinated. That was one of the greatest reasons that we actually have done as well as we have. So I'm very proud of our Premier and our Chief Medical Officer of Health for taking those tough decisions. And yes, we were privy to that, and we discussed it in great detail.
but more so is the public going out and getting vaccinated. And now, even though COVID is still amongst us, less people are getting very sick, less people are needing to go to the hospital, and very few people are dying. So what are the challenges you think that you accomplished during the last 4 years for your writing? What are some of the core issues that the writing have that you wish to, work on those when you get re-elected? Yeah, so many different issues. So each and every day, each case that comes into our office, I am personally in touch with. So I make sure I know exactly who those cases are, what are their needs. Sometimes it's just they desperately need a long-term care bed, and we're trying to find them that throughout the province. Sometimes it's issues with the hospital, and throughout COVID, as you know, visitors weren't allowed to go. So it's just trying to find those people, especially those who are at the last few days, to allow them to let somebody be with them, at the time of death. So that was very difficult. So that was extremely challenging. I think we all know somebody who perhaps passed away throughout COVID, and how lonely they were. Their family was the nurses and the doctors and the people around in the hospital. So we have to thank them for what they did as well. But the other issues here, obviously jobs, for me especially, is as parliamentary assistant previously to economic development, job creation, and trade. I do a lot of work with global companies and bringing jobs here. I've actually done it in Mississauga. I did a trade mission to India and HCL just up the street here. Opened up, and 800 jobs are going to be right here in my riding. 1,200 jobs across the country, and also a pharmaceutical company, Roche Canada. Personally involved with them. We were in competition with Ireland and with the US. They were giving them millions of euros and land and buildings and you name it, they were offering them. They chose us. They chose Mississauga, Streetsville. They chose Ontario because we are the best place to live, to work, to raise a family. And we were able to convince them to say this is the place to be. And I've done that with numerous companies. We've created many, many jobs in this riding. I'm very proud of that. But they're jobs for our kids. Something I did very early on was work with the pharmaceutical industry and the life sciences industry. And we put together a scholarship program. That scholarship program in the first year was strictly for Mississauga children that were in university in the first and second year, and they got $4,000 each as a scholarship. But what I insisted on was that the companies give them one-on-one mentoring. So many of those kids have now graduated, and they're working with those companies. So they were job ready when they came out of university. Because it was so successful, we expanded that across Ontario. This is not a government. This is something I did as an initiative with the industry. Now Life Science Ontario looks after that, and it's a very successful program. And we have to understand that throughout COVID, how important life science industry is. We now have a life science strategy here, and with that, we're able to tell these global companies to go to their headquarters, wherever they may be all over the world, US or Europe, and bring those companies here, do more manufacturing here, and that helps create jobs for us. We have the best talent coming out of our universities. Right. Let's utilize them in the best places. Who is your competitor here in this riding with you from NDP or Liberal? Who are you? Who are the people there? So they have been named. So the Liberal is Jill Promoli, and the NDP is Nicholas Rappaport. Okay. So I haven't met Nicholas, but I have met Jill a few times. Okay. Yeah. Okay. What is that one message you have today for the people who are watching you on Voice of Toronto TV Live right now? Well, first, thank you all again for everything that you've done, especially throughout the pandemic, and for your continued support. But what we're asking for, of course, is to allow our government and to give us your confidence to re-elect us so that we can continue and build on the work that we've done, building those hospitals, building those universities, medical spots. Once again, Ontario will be opening for medical grad and residency spots, which is very important for our kids, but to make sure that we can grow this province so that we have the jobs of the future. The previous government, we lost 300,000 jobs. Since we came into government, we've increased jobs by 500,000. I think that's a testament to the work that we do, to the economic that we do, to the red tape reduction that my ministry has done. We've saved businesses over $465 million annually, just from red tape reduction, and $7 billion annually because of the steps that our government has made, just to make life easy for them so that they can invest in their businesses and hire more people. So thank you so much for your support, and I hope I earn your support again. Well, we wish you well, and we wish you good luck with the elections, and
And I'm sure that if you have done a great job for your riding, I can see a lot of support here, and they will support you again, I believe. Okay, thank you so much for joining us. Thank you so much. So we're gonna sign off here, and वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक, और आपने आपके सेट अगर आपने अभी ऑन किए हैं तो आज हम अपना पहला शो कर रहे हैं विच इज़ इलेक्शन ऑन्टेरियो 2022। और अभी आप बातचीत सुन रहे थे, जो कि देख रहे थे ख़ास तौर पे, जो कि नीना टांगरी जो कि मिसिसागा एरन मिल से कैंडिडेट हैं पीसी पार्टी की, इन बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज थी और मैंने उनसे बहुत सारी बातें की और कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएं इस कैंपेन लॉन्च के अंदर। ख़ास तौर पे बहुत सारे से सवाल किए गए जो कि आप भी उसका जवाब सुनने के मुंतज़र थे। तो आई होपफुली सम मैसेज हैज़ कम आउट ऑफ दिस। इसके बाद हमारी मुलाकात हुई जो कि पीसी पार्टी के एक और कैंडिडेट हैं जो कि पहले एमपीपी हैं लेकिन अब ऑब्वियसली री इलेक्शन में जा रहे हैं, वो री इलेक्ट हो रहे हैं, और वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे दीपक आनंद साहब इटोबिको से, और ही वाज वर्किंग विद द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड ट्रेनिंग, उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं। इटोबिको के एरिया जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, वहाँ से बहुत सारे जो हैं प्रीवियस भी एमपीपीज जीत चुके हैं, और नाउ ही इज़ गोइंग फॉर री इलेक्शन। So I was with him on his campaign's launch a couple of days ago. So please watch this. I asked him a lot of questions. Hopefully this will come out to you some benefit as well. Please watch this. We'll come back to you after this. Thank you. Assalamu alaikum viewers. Very good afternoon. First of all, you're watching Voice of Toronto TV, and I have a very dear friend, and I have the honor of speaking with Samira Ali, kicking off his campaign office today. Good afternoon, sir. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अंजुम भाई, मालिक भाई, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग। बट यू नो आई नो रमज़ान का महीना है और चांद रात भी आने वाली है। चांद रात कल है, कल चांद रात। डिस्पाइट ऑफ दिस यू केम, आई कैन नॉट थैंक यू। नहीं, आप भाई हैं, आपके लिए नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे? अच्छा, मैं आपसे दो चार चीज़ें सिर्फ पूछूंगा। मुझे पता है कि देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ वर्क दैट यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 4 years। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो राइडिंग है उसका थोड़ा सा बताइए, आपकी राइडिंग कौन सी है? मेरी जो राइडिंग है सब सेकंड बेस्ट राइडिंग है। पहली इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमारा जो नेबर है उसकी राइडिंग के एमपीपी डग फोर्ड हैं, तो जो सेकंड बेस्ट राइडिंग है हमारी, उसका कारण ये है कि हमारे कल्चर में, हमारे जो है उसमें जो हम होस्ट होते हैं और जो गेस्ट होते हैं इसकी बहुत वैल्यू होती है। तो दुनिया भर से जो लोग आते हैं वो ग्रेटर टोरंटो एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट पे आते हैं। तो जब भी वो एयरपोर्ट पे आते हैं दैट इज पार्ट ऑफ आवर राइडिंग। तो वी आर द होस्ट, दिस राइडिंग इज द राइडिंग वेयर वी हैव एयरपोर्ट, वी हैव द मिसिसागा की अगर बात करें तो हम 15% जो है एरिया कवर करते हैं और 24 से लेके 30% तक टैक्स पे करते हैं। जो बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जोन है इस राइडिंग में आता है। 17 फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। तो एक तरफ तो ये बेस्ट राइडिंग इस तरफ से है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये रही है अंजुम भाई कि ओवर मैनी डेकेड्स दिस राइडिंग हैज बीन इग्नोर्ड। आप कोई भी बेस्ट से बेस्ट अगर लीडर्स की बात करें तो हमारी राइडिंग से आए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताया मिनिस्टर नवदीप बेंस यहाँ से थे, मेयर क्रॉम्बी यहाँ से पहले काउंसलर थी, उससे पहले जगमीत सिंह यहाँ पे एमपी थे। सो दिस राइडिंग हैज प्रोड्यूस्ड वंडरफुल पीपल, बट एट द एंड ऑफ द डे there is still a lot of work which is still pending in this riding. So this, in my opinion, is the riding which has given a lot of opportunities to many of our elected officials, but this is the riding which has been ignored at the same time. अच्छा, ये बताइए कि पिछले 4 साल में आपकी जो टर्म रही है इसमें माइलस्टोन क्या है जो आपने अचीव किया है, और ऐसा क्या रह गया है जो कि once you get re-elected again on June 2nd फिर आप उसको करना चाहेंगे? देखिए, इन टर्म्स ऑफ द वर्क काम की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि माइलस्टोन में आई रिमेंबर जब मैं नया एमपी बना था तो सबसे पहले जो मुझे धक्का लगा था, शॉक लगा था कि पूरे मिसिसागा में, पूरे पी रीजन में हर हाई स्कूल के पास
ट्रैक एंड फील्ड है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। मॉल्टन एक अकेला जगह है जिसपे 2 हाई स्कूल हैं और दोनों में ट्रैक एंड फील्ड नहीं था। तो आई रियली टुक इट टू माई हार्ट। आई ऑलवेज बिलीव इन अचीविंग अ बिगर गोल्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि 1996 में व्हेन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था ट्रैक एंड फील्ड में, उसमें 2 जो एथलीट थे वो मॉल्टन से थे। अच्छा, वी हैव डन इट, व्हाई कैन नॉट वी डू इट अगेन? बट अगेन अगर आप कोई भी इमारत बना रहे हैं और आपके पास टूल ही नहीं है तो आप इमारत कैसे बना सकते हो? Very right. So this is what I feel proud of, and I want to say thank you to the Premier Ford. I took that to him, and he has promised me to deliver on his promise to making sure that कि दोनों स्कूलों में ट्रैक एंड फील्ड हो। फर्स्ट वाला ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है और जो सेकंड वाला है इट इज़ इन नेगोशिएशन विद द सिटी एंड द स्कूल, एंड वी आर वेरी क्लोज where we are going to hopefully soon sign up an understanding and it will be built as well. अच्छा, आपकी ये जो राइडिंग है इसमें आपकी जो मेजॉरिटी है यहाँ पर लोगों की, किस टाइप के लोग यहाँ पर जो हैं वो रहते हैं? बड़े दिल वाले नहीं, आई एम टॉकिंग बट जनरली इन अ सेंस ऑफ कम्युनिटी वाइज। वापस मैं कहूँगा बड़े दिल वाले। अच्छा, दैट्स गुड। मिसिसागा एक ऐसी राइडिंग है वहाँ पे कोई पार्टी नहीं जीतती है, वहाँ पे वो जीतता है जो दिलों पे राज करते हैं, जो जुड़ सके। वेरी राइट। तो मैं बहुत बार जब जाता हूँ, मैं आपको बात जामे मस्जिद की बात बताता हूँ, या आप मॉल्टन मस्जिद की बात करें, या गुरुद्वारे की बात करें, मंदिर की बात करें, कम्युनिटी सेंटर की बात करें, मॉल्टन की बात करें, कहीं पे भी जहाँ पे भी मैं गया हूँ, आई हैव टू से दिस, हर कम्युनिटी मेंबर ने दिल खोल के साथ दिया है और प्यार दिया है, एंड आई दैट इज़ व्हाई आई कैन टेल यू एंड आई एम ऑनेस्ट अबाउट दिस, इट इज़ नॉट द कलर, इट इज़ नॉट द एथनिसिटी, it is the heart that our people have in Mississauga Mountain, that is the best and the biggest thing. June 2nd is election day. When is advanced polling starting? So advanced polling is still being considered. Last time there were only 4 days. This time it is going to be 10 days. 10 days. Okay. The date's not been announced yet. Not yet, but it will be done as soon as the writ drops. एक ऐसा मैसेज हमारी कम्युनिटी के लिए क्या है आज? यही मैसेज है कि आई truly feel blessed that God gifted me this job, you gifted me this job. The job was not easy, needed a lot of sacrifice, but you made it easy. And thanks to my family, my son, my daughter, my wife, and my extended family, जिसमें Anjum bhai, you are also included into it. All of you had made this job easier. As Premier himself says multiple times, अगर एक छोटा सा हम प्लांट लगाते हैं, वो रातों रात उसमें शेड नहीं देना शुरू हो जाता, वो फूल नहीं देना शुरू हो जाता, फ्रूट नहीं देना शुरू हो जाता। इट टेक्स टाइम। सो दिस इज़ द टाइम वी हैव स्टार्टेड द वर्क and we need this term so that we can finish that work. $158 billion spent करने हैं एक हॉस्पिटल मिसिसागा में, एक हॉस्पिटल ब्रैम्पटन में, मेडिकल स्कूल ब्रैम्पटन में, LRT की बात करें, सबवे की बात करें, इससे अलावा इतने प्रोजेक्ट हैं। एक समय था जब 3 लाख जॉब्स इस प्रोविंस से चली गई थी, आज समय है अब 3,36,000 जॉब इस समय खाली पड़ी हैं, और we need to come together, work together and make sure कि Ontario is prosperous. Good luck, all the best sir. Thank you. वेलकम बैक व्यूअर्स। ये थे हमारे साथ दीपक आनंद, जो कि एटोबिको से कैंडिडेट हैं पीसी पार्टी के, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, अभी थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो हमारे मिनिस्टर हैं मैकनॉक्टन, जो लेबर के, उनके साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। हमने कोशिश ये की है कि अपने इस प्राइम टाइम शो के अंदर एवरी फ्राइडे को 3 से 4 हमारे जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, सबसे पहले तो ये, और उनकी जो रैलीज़ हम कवर कर रहे हैं, उनकी जो ओपनिंग्स हम कर रहे हैं, कैंपेन ओपनिंग्स, उसके हवाले से बात की जाए, और उनका एक ख़ास तौर पे एक मैसेज जो है, ख़ास तौर पे जो उनका मैंडेट क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है उस पार्टी का, उस हवाले से भी जो हमारे होस्ट और भी डिफरेंट होस्ट जो उनसे मिल रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, और मेरी भी जो बात होती है, तो हमारी कोशिश ये है कि एक पर्सपेक्टिव जो है वो आपके सामने रखा जाए कि जब आप जून 2 को वोट करने के लिए जाएं, वैसे तो आप एडवांस पोल्स में भी जा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, लेकिन जून 2 विल बी द डे ऑफ इलेक्शन इन ओंटारियो, और उस दिन अगर आपने वोट नहीं डाला एडवांस पोल्स के अंदर, तो आप जाके वोट डालिए, अपना जो हक है उसको आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए इस मुल्क में रहते हुए, और कोशिश ये करें कि अगर आपको कैंडिडेट्स का पता नहीं है
تو آپ ہمارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. voiceoftoronto.tv@gmail.com پہ آپ ہمیں لکھ بھی سکتے ہیں. وی کین ٹیل یو کہ آپ کے ایریا میں اگر آپ اس ملک میں نئے ہیں اور آپ کو علم نہیں ہے کہ یہاں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں اور آپ کو کس کو ووٹ کرنا ہے, تو پلیز ڈو گیٹ ان ٹچ ود اس ود اے فیڈ بیک, اور وی ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ ویک میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گی سمیرہ علی, جو کہ ملٹن سے MPP ہیں, ممبر کونسل رہ چکی ہیں, اب MPP کا ٹکٹ لڑ رہی ہیں لبرل کے اوپر. شی ول بی ود اس ان اسٹوڈیوز, اینڈ along with that there will be another 2 candidates جن سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ان سے بھی ہم کوشش کریں گے اسٹوڈیو میں ان سے بات کریں گے یا ویڈیو کال پہ ان سے بات کریں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اپنا, اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر وی کی ناٹ گیٹ بیٹر. پروگرام دیکھتے رہیے اینڈ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کو سپورٹ کرتے رہیے. آپ کا بہت شکریہ. ویری گڈ ایوننگ اینڈ ویری گڈ نائٹ. تھینک یو فار واچنگ پرائم ٹائم ود انجم ملک. اللہ حافظ. بائے بائے.